हेलो हाय नमस्कार। आप देख रहे हैं गैजेट टाइम्स। आई एम पावनी जैन एंड वेलकम टू आवर लेटेस्ट शो, जहां पर मैं साथ में मेरे मोइनाक पाल हम लोग बात करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट द अपकमिंग एप्पल लॉन्च इवेंट। बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है। Yes. एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट इट। मोइनाक इज बिजी फाइलिंग कॉपीज ऑन इट। तो सबको जानना है कि लेटेस्ट एप्पल आईफोन इवेंट पर क्या होने वाला है। एक्चुअली आई जस्ट सेड एप्पल आईफोन इवेंट, So which is not right, I guess. yeah, it's Apple event, but kind of partially right. As we all know, the Apple is planning to launch a couple of devices at the event. Obviously, starting with the iPhone 14 series. लेकिन इस साल Apple ने decide किया है. Multiple reports have corroborated that Apple will not be launching the mini this year. Instead, it will be launching a new Pro model. Well. So there will be the total of the standard iPhone 14 and there will be 3 Pro models including one Pro Max as well. तो अभी बेसिकली हमारे पास 4 आईफोन तो आएंगे ही हमेशा की तरह, जस्ट लाइक आईफोन 13 सीरीज और आईफोन 12 सीरीज या उससे भी पहले। बट इस बार लाइक मोइनाक सेड देयर विल बी एप्पल आईफोन 14, 14 Pro Max, 14 Pro as well as 14 Max. So basically मिनी को रिप्लेस कर रहा है मैक्स मॉडल। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि मिनी को क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? One of the reasons is कि ऐसा क्लेम कर रहे हैं बहुत सारे रिपोर्ट कि the sales of the mini version has always been very low, which is why they thought of bringing the new Max model instead of mini model, right Moinak? Actually yes, that's true. So Apple के mini models जो भी हैं, जो the 12 mini and the 13 mini, इसके sales have not always been great because Apple already has a small iPhone in its series called the iPhone SE. Right. तो iPhone SE and SE2 already sales में हैं. So mini का it's like people don't see a lot of value with the mini unless and until they really want a small phone, small form factor with the internals of a flagship smartphone. ये तो सही है मोइना कि मिनी को रिप्लेस कर रहे हैं मैक्स से, बट मैक्स में नया देखने को क्या मिलेगा? मतलब तेरे को क्या लगता है कि बहुत ज्यादा इट विल बी हेवी ऑन हार्डवेयर पार्ट, या मिनी के साथ होगा या नहीं होगा? मिनी से कम प्राइस पे होगा, ज्यादा प्राइस पे होगा, क्या लगता है? There will be two phones in the Pro series and there will be one Max model and one standard vanilla variant. And the idea behind all the 4 models would be increase in camera hardware that would be bettering and improving their already great camera hardware. I am sorry but speaking of this camera hardware, ये क्या जो एप्पल का जो नया इनवाइट आया है उस पे ये जो पूरा गैलेक्सी स्टारी इफेक्ट है, आई थिंक उसको भी हम बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इट हैज समथिंग टू डू विद कैमरास आल्सो। इज इट ट्रू? Kind of like Apple has been working on quite a few features for its upcoming iPhone 14 series, and like with the Google Pixel where we have astrophotography. So I think Apple is also planning to bring something on the same lines. And I think वो invite signifies that. परफेक्ट। तो ये था इन सब चीजों के बारे में। हालांकि आई ऑल्सो रेड इट समवेयर रिपोर्ट्स क्लेम कि जो एप्पल आईफोन 14 होगा एज वेल एज मैक्स मॉडल, दीज टू विल कम विद पहले वाला A15 बायोनिक चिप। इज इट ट्रू? बिकॉज आई थिंक बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि प्रो मॉडल्स विल गेट टू सी द न्यू A16 बायोनिक चिप। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? Like reports have stated, but I don't know how true is that. But considering the reports in the last 1 year, 1.5 years, due to the pandemic and because of the chip shortage which resulted because of the pandemic, I think Apple is trying to make a decision where they will bring the standard variants of the iPhone 14 and the 14 Max with the A15 Bionic chipset, while the Pro models would get the A16 chip. Well, in that case, it makes lot of sense, yeah, because semiconductor shortage वाला जो problem है, that is still very genuine, and a lot of brands and companies and everybody is facing that problem. और in fact अभी हमने एक recently interview भी किया था JBL के साथ, where the actually the person, the representative spokesperson mentioned कि जो semiconductor shortage वाला problem है ये रहेगी अभी market में। तो अगर ऐसा है कि if Apple decides to go ahead with A15 chip with its iPhone 14 and Max model, तो ऐसा हो सकता है guys।
इसके अलावा क्या देखने को मिल सकता है अपने को लॉन्च इवेंट पे? So Apple is also planning to bring a new iPad, and there will be the new Watch Series 8, of course. And alongside that, Apple is also planning to bring the Watch Series SE and a new Watch Extreme Edition. Although these are all in reports right now, so we'll have to wait till the launch date to see if that's true. Which is September 7, right? Yes. तो सितंबर 7 को ये सारी चीज़ें हमें सामने देखने को मिलेंगी। एप्पल एक्चुअल में क्या लॉन्च करता है। ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ दोज इवेंट्स जिसके लिए हर कोई वेट करता है ईगरली, बी इट यू नो एज टेक एक्सपर्ट या फिर ऑडियंस, बिकॉज दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन अपग्रेडिंग टू द न्यू लेटेस्ट आईफोन। Or anything else that you would want to mention about the upcoming event? What are you excited about for this event? So I'm excited about the iPhone 14 series, of course, and I'm also excited, like if it's going to come, obviously, the Watch Extreme Edition, which is tipped to get a lot of new features this time. बाकी मैक्स मॉडल भी मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पर्सनली मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ उसके लिए, क्योंकि ऐसा बोल रहे हैं कि उसका प्राइसिंग भी काफ़ी लो होगा और उसमें उतने ही बढ़िया फीचर्स होंगे। लोग उसको बहुत ज़्यादा आईफोन 13 से कंपेयर कर रहे हैं कि उसका जो बॉक्सी डिज़ाइन था या जो उसका हार्डवेयर था, आईफोन 14 कुड बी वन ऑफ दोज फोन्स जिसमें बहुत सही हार्डवेयर आएगा एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। In terms of pricing, although reports have stated that Apple might be charging at least $100 more than its last series, but we'll all have to wait and watch till September 7th when Apple launches its. Well, this is what we think about the upcoming Apple launch event. आपके क्या thoughts हैं? What are you excited about? Let us know in the comments. ऐसा discussion आप और चाहते हैं about the latest launches, important launches? Let us know in the comments that too. और इसी के साथ it is me, Pavni Jain. That's Moinat Pal signing off. Subscribe to Gadget Times for more such chatty sessions. Thanks for watching. Thank you.